Hello students, myself Mushir Ahmed. Now today I am going to teach you another topic in history, Indian trade, colonization and the global system. It means how to Indian trade affect in a colonization period, and the global system, how to global system affected due to colonizations. So now let's start in context of India. Fine cotton of India exported to Europe. Fine cotton of India. India's finest cotton export to Europe. All fine quality cotton export to Europe. And the tariff imposed on import of cloth in Britain. Tariff imposed on import of clothes in Britain. Tariff increased on the import of cloth in Britain. Indian textile faced stiff competition. How? Why? Because of that, India's cotton industry totally ruined. Why? Because of that, handmade clothes costly in comparison to machine made cloth. So the cost of handmade clothes is costly in comparison to machine made clothes. It's better, machine made clothes is better than handmade clothes, and easily and at cheapest price available in the market. So in that situation, entire handmade industry of India collapsed. So Indian textile industry faced stiff competition. Then raw cotton was exported to British cotton textile industry, and the raw cotton, those are found in India, was export to British cotton textile industry. And very little raw material available for Indian handmade cotton industry. So obviously the price is higher in comparison to handmade industry. Now indigo and opium production increased in India to finance tea from China. Indigo and the opium production increased day by day. Why? Because of that, some land classified only for the production of indigo and opium. You heard about the indigo movement. So indigo and opium production increased in India to finance tea from China. How to finance? Now let's discuss. Tea and other substance were imported from China. Tea and other substance import from China in exchange for the money received from the export of opium. Exchange for the money received from the export of opium to China. So that how to balance and how to finance tea from China. Why? Because of that, tea and other substance were imported from China. An exchange for money received from the export of opium, those are forcefully grown in India. Now in the 19th century, exports of food and raw materials from India to Britain and the rest of the world increased. So now in that situation,
in the 19th century, export of food and raw material from India to Britain and rest of world increased. The cost export of food and raw material from India to Britain and the rest world increased. It means price of food and raw materials increased India to Britain and the rest of the world increased now in 19th century. Now the goods that were sent to India from Britain, it means those goods sent to India from Britain were much higher than the cost of goods shipped from Britain to India. Higher, it means the item or the goods sent to India from Britain were much higher than the cost of goods shipped from Britain to India. It means just like a trade deficit situation. Britain was always in a state of trade surplus with India. It means Britain always in a benefit situation in trading activities. So Britain was always in a state of trade surplus. So this means that Britain always benefited in a mutual trade. It means in mutual trade, Britain always in benefit situation. Britain used to this advantage to compensate the trade deficit with other countries. Trade deficit in the situation where import is more in comparison to export. So now these are the Indian trade, colonization and a global system, and the trade deficit we discussed there. So आज हम इंडियन ट्रेड, कॉलोनाइजेशन और ग्लोबल सिस्टम का डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जो फाइन कॉटन, अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन था वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था यूरोप में, और जो टैरिफ थे, टैरिफ का मतलब जो शुल्क इम्पोज किया जाता था, इंपोर्ट ऑफ क्लोथ इन ब्रिटेन, इंपोर्ट का मतलब क्या, गुड्स कम फ्रॉम अदर कंट्री, यानी इंडिया में जो सामान लाया जाता था उस पर टैरिफ लगता था। इंडियन टेक्सटाइल फेस्ड स्टिफ कंपटीशन, इंडिया का जो घरेलू टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग था वो पूरी तरीके से कंपटीशन फेस कर रहा था, बहुत कड़ा संघर्ष कर रहा था अपने को सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की होममेड इंडस्ट्री थी, जो कि एक तरीके से चरखा काट कर लोग कपड़ा बुन रहे थे, वह सामान महंगा बिकता था मार्केट में इन कंपैरिजन टू मशीन मेड, यानी जो मशीन का सामान था वो चीपर रेट में अवेलेबल था और बढ़िया क्वालिटी का था। हैंडमेड सामान महंगा था, तो इसलिए वह बहुत स्टिफ कंपटीशन को फेस कर रहा था इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये एक तरीके से कोशिश थी कि इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे कोलैप्स कर दिया जाए, इंडिया का जो हैंडमेड इंडस्ट्री है उसे पूरी तरीके से रूइंड कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। The raw cotton was exported to British cotton textile. इंडिया का जो रॉ कॉटन था, कच्चा जो कॉटन था, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, अब इंडिगो और ओपियम, नील और अफीम की जो खेती होती थी इंडिया में, वो डे बाय डे बढ़ रही थी, क्योंकि आप जान रहे हैं फोर्सफुली इसे उगाया जाता था। इंडिया टू फाइनेंस टी फ्रॉम चाइना, इसको उगाकर आप इसे बैलेंस कैसे करते थे, जो चाय आप चाइना से मंगाते थे उससे आप इसको फाइनेंस करते थे। यानी इंडिगो और ओपीएम के प्रोडक्शन हमने बढ़ाया इसीलिए ताकि जो चाय हम परचेज कर रहे हैं चाइना से उसको इसी से फाइनेंस कर सकें। टी और अदर जो सब्सटेंसेस थे जो कि चाइना से मंगाए जाते थे, एक्सपोर्ट ऑफ ओपीएम,
ओपियम को एक्सपोर्ट करने के बदले, यानी उसी से इस चीज को एक्सचेंज कर लिया जाता था, इसीलिए फोर्सफुली यहां पर उगाया गया। इन 19th सेंचुरी में एक्सपोर्ट ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट वर्ल्ड इंक्रीज। 19th सेंचुरी में फूड और रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट यानी निर्यात था इंडिया से ब्रिटेन को और रेस्ट वर्ल्ड को, वह इंक्रीज हो गया। द गुड्स दैट वेर सेंट टू इंडिया फ्रॉम ब्रिटेन, यानी जो सामान इंडिया भेजा जाता था ब्रिटेन से, मच हायर, वो बहुत कॉस्टली था, देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स शिप्ड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, और जो सामान ब्रिटेन से इंडिया भेजा जाता था उससे महंगा था ये। सो ब्रिटेन वॉज ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ ट्रेड सरप्लस। तो इन ब्रिटेन हमेशा ट्रेड में बेनिफिट की कंडीशन में रहा है, इसीलिए ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। ट्रेड सरप्लस का मतलब, दिस मीन्स दैट ब्रिटेन ऑलवेज बेनिफिटेड इन ए म्यूचुअल ट्रेड, यानी म्यूचुअल ट्रेड, आपसी ट्रेड में ब्रिटेन को हमेशा फायदा हुआ। उसके पीछे भी एक रीजन है। ब्रिटेन यूज दिस एडवांटेज टू कंपनसेट द ट्रेड डेफिसिट विद अदर कंट्रीज। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हुआ एक तरीके से आपका घाटा। तो ब्रिटेन जो एडवांटेज उसको मिलता था म्यूचुअल ट्रेड से, उसको कंपनसेट, भरपाई करता था वो इस ट्रेड डेफिसिट की जो अदर कंट्रीज के साथ उसको हो रही थी। अब क्वेश्चन है कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? A situation in which the value of goods a country imports is greater than the value of goods it exports। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट, तो ऐसी कंडीशन में ट्रेड डेफिसिट जनरेट होता है, जिसमें देश का आयात, आप समझ लीजिए कि निर्यात से ज्यादा होता है, वहां पर ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन जनरेट होती है। तो ब्रिटेन के साथ ऐसा नहीं था, बट इंडिया के साथ ऐसा था। ब्रिटेन ने इस म्यूचुअल ट्रेड से जो पैसा अर्न किया, वह जहां जहां पर भी उसको घाटा हो रहा था वहां उससे इसकी भरपाई करता था वो। So now that is the Indian trade, colonization and the global system.